एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32। बिनीटो बिनीटो is a real estate industry is in the real estate industry. The financial end of Benito is 31st of December 17. The following exhibit provides information relevant to the question. Sales and leaseback describes the sale and leaseback transaction with Ortine company and key performance indicators that are affected by the sale and leaseback. Okay. In accordance with the IFRS accounting standards, describe how an entity assesses whether the transfer of an asset qualifies for a sale in sale and leaseback. In accordance with IFRS 15 revenue from contracts with customers, it has been first seen that whether the control has been passed to the lessee or not. And if the control has been passed on to the lessee, then the transfer qualifies as a sale in sale and leaseback transaction. तो उससे पूछा है, explain how sale and leaseback transactions are dealt with by the seller lessee. Okay, by the seller lessee in accordance with IFRS 16 if the transfer of an asset qualifies for a sale. So if a transfer of an asset qualifies for a sale, then a seller lessee de-recognizes the current asset from his own books, recognizes an ROU asset in the proportion of of the previous assets carrying amount, uh, recognizes lease liability that in accordance with the present value of all the lease payments that have to be made in the future. उससे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है, वी recorded in the statement of profit and loss. The ROU asset is depreciated on a normal basis. Okay. After that, explain how a sale and leaseback transaction are dealt with by the seller lessee if the transfer of an asset does not qualify as a sale. If the transfer asset does not qualify as a sale, then in sale and leaseback transaction, what happens is, um, we debit, matlab the cash has been received, so we show as the cash has been received, and and a liability and a contractual liability is created because see क्या हो जाता है कि because the sale has not occurred only, so what happens is we have got the money and now we are liable to pay that money also. मतलब हमको कैश पेमेंट मिला उस अमाउंट का, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको वो चीज फिर से उसको पे करनी है, तो इसलिए हमें उतने की लायबिलिटी ओपन अप करनी है. Explain the effect on accounting treatment if the sale and leaseback agreement contains a call option under which the seller lessee can act its option under the option repurchase property. So the accounting treatment if a sale and leaseback agreement contains a call option is that as a call option has been involved, so the control of the asset has not been fully passed on to the lessee. So what to the buyer lessor basically. So what happens is in this case the sale and leaseback does not take place only because the control has not yet passed on to the lessee. So what will happen is कि sale and leaseback आएगा ही नहीं, and we will again record it as a cash debit and lease liability, sorry, as a liability credit. ऐसा चेक करते हैं. अच्छा एक मिनट, नीचे ना ये जो उन्होंने बोला एग्जीक्यूटिव 16 अकाउंटिंग एंट्रीज. हाँ, तो अभी ये जो है ना क्वालिफाइज फॉर सेल एंड डज नॉट क्वालिफाई फॉर सेल, की मुझे एग्जिबिट 1 से लेना है. तो मुझे लगता है मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे विथ अमाउंट्स बताना है. पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना था. आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, ये रहा. परफेक्ट परफेक्ट. Let's go. An entity assesses whether the transfer qualifies as a sale by using the guidance in IFRS 15 revenue from contracts with customers. A sale has occurred when the customer has satisfied a performance obligation by transferring control of the asset. Control refers to ability to direct the use of the asset and obtain substantially all of its benefits. तो कंट्रोल रेफर तो हमें बाद में कंट्रोल भी एक्सप्लेन करना है कि कंट्रोल क्या होता है. तो कंट्रोल इज एन एबिलिटी to direct the use of the asset and obtain substantially all of its remaining benefits.
अभी सेलर लेसी क्या करता है, तो ये देखो, इट इट डीरेकग्नाइजेस द एसेट, ROU asset is recognized and measured in the proportion of the previous carrying amount of the asset which relates to the rights retained by the seller lessee. The lease liability is recognized equal to the present value of the lease payments to be made. And ये देखो, profit and loss is reported uh, in the statement of profit or loss based on the rights transferred to the buyer list. ठीक है. Note that if consideration received for the right exceeds the value. हाँ, अभी ये वाला जो ट्रांजैक्शन है, ये वाला भी मतलब जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग में मैं बता देता हूँ क्या होता है. लेट्स अज्यूम कि जैसे इस क्वेश्चन में ना फेयर वैल्यू ज्यादा दिया होगा. हाँ, ये देखो फेयर वैल्यू दिया हुआ है. सो ये वाला पॉइंट एक्चुअली हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के बाद सम्स के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, बट फिर भी मैं अभी के लिए बता देता हूँ कि सपोज करते हैं कि फेयर वैल्यू इज हायर देन द कंसिडरेशन दैट व्हाट वी हैव गॉट. मतलब समझो हमने सेल किया 7 लाख का, और फेयर वैल्यू था लेट्स अज्यूम 7,50,000. तो बिकॉज 7,50,000 फेयर वैल्यू था और हमको मिला सिर्फ 7 लाख, दैट 50,000 इज नाउ ट्रीटेड एज एज क्या बोलते हैं, प्री पेमेंट ऑफ लायबिलिटी. लेकिन ऑन द अदर हैंड लेट्स अज्यूम कि फेयर वैल्यू इस बार था 6,50,000 एंड हमको मिला 7 लैक्स. तो हमको ज्यादा मिला. तो बिकॉज हमको ज्यादा मिला, वी ट्रीटेड एज एडिशनल फाइनेंसिंग. चेक करते हैं. नोट दैट इफ द कंसिडरेशन received for assets exceeds its fair value, if consideration received for assets exceeds fair value, this is accounted for as additional financing. If the consideration is below the asset's fair value, then it is accounted for as prepayment of lease liability. Subsequently, the ROU asset is depreciated over the lease term. Interest is charged on the lease liability using rate implicit in the lease. फिर what will happen if asset does not qualify for a sale? So if asset does not qualify for a sale, तो ये देखो, the seller lessee continues to recognize the asset in the statement of financial position. The seller lessee accounts for the proceeds from sale and leaseback as financial liability. हम उसे as financial liability show कर देंगे with reference to IFRS 9 financial instruments. ठीक है. क्योंकि सेल तो हुआ ही नहीं, लेकिन हमको पैसे आ गए जो हमको फिर से देने हैं. तो जैसा मैंने बताया था कि हमें यस फाइनेंशियल लायबिलिटी शो करना है. या आई डिड नॉट यूज द वर्ड IFRS 9, बट यस. व्हाट, हाँ अभी ये देखो, इफेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट दैट कंटेन्स अ कॉल ऑप्शन. If the transaction contains a call option under which the seller lessee can, at its option, repurchase the property, then such an option generally precludes the accounting under IFRS 15. This is because the existence of the call option means that seller lessee retains control of the property. Therefore, sale and leaseback accounting does not apply, with asset remaining in the statement of financial position and cash received treated as financial liability. So cash account debit, financial liability account credit. दोनों दोनों पॉइंट्स में ये बोलना है कि एसेट इज नॉट डी रिकॉग्नाइज्ड, ये खाली बोलना है. ठीक है. अभी यूजिंग एग्जिबिट 1, एक्सप्लेन इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9, IFRS 16, the accounting entries for the sale and leaseback transaction in the financial statements of Benito Company on 1st of January 17. Its head office transfer. If it qualifies for sale, if it does not qualify for a sale. तो सबसे पहले इट क्वालिफाइज फॉर सेल कर दे, जो वो बहुत बड़ा है. तो विद अकाउंटिंग एंट्रीज पूछा हुआ है. तो देखो, on 1st of January 17, Benito sold its head office, which had a carrying amount of 3.5 million to on time for a cash of 7.5 million. On the same date, Benito Company has entered into contract with On Time to use its head office for 20 years, which with annual payments payable at the end of each year. Both companies have have correctly accounted for the transaction as sale and leaseback. At 1st of January 17, the fair value of the head office is 6.75 million. The present value of the lease liability is 5.47 million. तो अब देखना,
सबसे पहली बात तो वी डी रिकॉग्नाइज द एसेट, सो द एंट्री वुड बी, जो जर्नल एंट्रीज के साथ बताना है ना, हाँ अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डी रिकॉग्नाइज द एसेट फ्रॉम आवर बुक्स. सो 3.75 मिलियन एसेट अकाउंट क्रेडिट. एसेट अकाउंट क्रेडिट हो गया. नेक्स्ट, कैश हमको मिला है 7.5 मिलियन, सो कैश अकाउंट डेबिट 7.5 मिलियन. प्रॉफिट अकाउंट डेबिट जो उसका मतलब कम रहेगा वो 7.5 माइनस 3.75, तो 3.75. तो दिस इज द प्रॉफिट दैट हैज बीन अर्नड. ठीक है. अभी द फेयर वैल्यू ऑफ द हेड ऑफिस इज 6.75 मिलियन. अब एक्चुअली हमको मिले 6.75, लेकिन उसका जो फेयर वैल्यू है एसेट का वो है 6.75. अच्छा, अब ना हमें आरओयू एसेट को रिकॉग्नाइज करना है. अच्छा, यहाँ पे हमें ना प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ लीज लीज लायबिलिटी दी हुई है, तो अपन लीज लायबिलिटी की भी एंट्री मार देते हैं कि लीज लायबिलिटी के लिए अपन क्या मारेंगे, लीज लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे 5.47 मिलियन. एंड अभी उसके, नहीं, एक काम करते हैं ना, बेटर देन डूइंग दिस वन वन एंट्री, वी विल पास दैट वन फुल कंबाइंड एंट्री. तो फॉर दैट कंबाइंड एंट्री कैसे रहेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट 7.5 मिलियन, इसको ना डेबिट लिख देता हूँ. ठीक है. फिर क्रेडिट किया था मैंने एसेट को, जो था 7 जो था 3.75. ठीक है ना. अभी मैं क्रेडिट करूंगा मेरी लीज लायबिलिटी, जो है 5.47. अब मेरे को मेरा आरओयू चाहिए. जो आरओयू तो मेरा डेबिट ही जाएगा, लेकिन जो मेरा आरओयू, जो मैंने क्या बताया था कि सबसे जो वरना आरओयू रहता है, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज इट, वी रिकॉग्नाइज इट इन द प्रपोर्शन of the previous carrying amount. So how will we do it? The formula of ROU is lease liability ऊपर divided by sales proceeds into carrying amount of the asset. So now we will see कि what is the difference between between 7.5 and 6.75 million. So what is the difference between them? It is 0.75 मिलियन. सो जो 0.75 मिलियन का जो डिफरेंस है, दैट विल रिड्यूस फ्रॉम लीज लायबिलिटी इन द कैलकुलेशन. व्हाई आर वी डूइंग दिस, बिकॉज अगर अपन देखें तो अपना ये नीचे का जो सेल्स वैल्यू है हमने वो भी कम लिया है, और हमने सेल्स वैल्यू भी हमारा कम लिया है उतने से. सो हमें तो हमारा एक क्या बोलते हैं प्रपोर्शनेटली माइनस या वो कैलकुलेशन नहीं बनता, क्योंकि देखो लीज लायबिलिटी में 5.47 नीचे, मतलब 5.47 इन द सेंस विदाउट रिड्यूसिंग द 0.75 मिलियन का डिफरेंस, और सेल प्रोसीज में हमको लेना है 6.75. सो मतलब इट डजेंट मैच. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5.47 माइनस 0.75 मिलियन, विच इज 4.72, डिवाइड बाय 6.75 इंटू 3.75. सो व्हाट विल हैपन इज 4.72 डिवाइड बाय 6.75 into 3.75. तो that gives us 2.62. तो ये हमको देता है 2.62. तो हमारा आरओयू एसेट जो पैदा होता है वो होता है इधर 2.62 का. ठीक है. और अभी हमें हमारा प्रॉफिट जो है वो हमें इक्विवेलेंटली एडजस्ट करना है. तो 2.62 प्लस 7.5 जो भी मुझे देता है, माइनस 3.75 माइनस 5.47, तो मेरा जो प्रॉफिट आता है वो ऑन द क्रेडिट साइड आता है, मतलब मुझे एक्चुअली प्रॉफिट ही आ रहा है. तो प्रॉफिट विच इज ऑन द क्रेडिट साइड विल गिव मी 0.9. ऐसा तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं. हेड ऑफिस क्वालिफाइज फॉर अ सेल बिकॉज द कंसिडरेशन फॉर सेल
head office is not at fair value, Benito company recognizes 0.75 excess of fair value. कंसिडरेशन जो है वो फेयर वैल्यू पे की नहीं गई थी, लेकिन फेयर वैल्यू पे ही होनी चाहिए थी. So, 0.7.5 minus 6.75 as additional financing provided by on-time company. The present value of annual payments amounts to 5.47, of which 0.75 relates to additional financing. So, ये हमने बोला था ना कि जो एडिशनल फाइनेंसिंग होता है, जैसे कि फेयर वैल्यू इस बार कम आई और हमें ज्यादा पैसे मिले थे. सो दिस वाज एडिशनल फाइनेंसिंग दैट वाज प्रोवाइडेड टू अस. तो बिकॉज दिस वाज प्रोवाइडेड टू अस, हमने उसे लीज लायबिलिटी से माइनस कर दिया. इट्स एज गुड एज कि अगर हमको लेट्स से कि 75,000 रुपये पैसे पैसे मिले थे, तो हमने 5 लाख के हमें लीज पेमेंट्स करने थे. बिकॉज हमें 5 लाख के लेके लीज पेमेंट्स करने थे और हमें 75,000 उस साइड से ज्यादा ही मिले, तो हमने ऑफसेट कर दिया. टू एडिशनल फाइनेंसिंग. At 1st of January 17, Benito measures the ROU asset arising from the lease, say from the lease back of the building at proportion of the previous carrying amount of the head office, which relates to the right of use retained. This is calculated at 3.75 million. So 3.75 million क्या हमारा कैरिंग अमाउंट, उसको मतलब बेसिकली देखो, ये डिवाइड किया हमने 6.75 मिलियन के साथ और मल्टीप्लाई किया 4.72. इट्स एज गुड एज कि 4.72 मिलियन को डिवाइड किया 6.75 और मल्टीप्लाई किया 3.75 के साथ, तो भी आंसर सेम आता है 2.62. Benito company recognizes only the amount of gain which relates to the rights transferred to on time. The gain on sale is 3 million, of which 2.1 million relates to ROU, मतलब right of use asset retained. The rights transferred to on-rent are measured at 0.9 million. मतलब बेसिकली जो 3 million का हमें प्रॉफिट हुआ, उसमें का 2.1 तो ये अपने ROU ने खा लिया, तो बचा गया तो 0.9 मिलियन बच गया, ऐसा. तो ये रही जर्नल एंट्री, जो ये मतलब अकाउंटिंग एंट्री एग्जैक्टली द सेम एज वी डिड. गेन्स ऑन राइट ट्रांसफर जो एसओपीएल में जाता है. हाँ, अभी व्हाट विल हैपन इफ द सेल डज नॉट क्वालिफाई एज अ सेल और द ट्रांसफर डज नॉट क्वालिफाई एज अ सेल. इफ द ट्रांसफर डज नॉट क्वालिफाई एज अ सेल, तो जैसे मैंने बताया था कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू लीज टू फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट एज पर IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. 10.5 7.5. परफेक्ट. आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार. हेड ऑफिस विल कंटिन्यू टू बी recognized by Benito company at its carrying amount of 3.75. The financial liability is recognized equal to the transfer proceeds of 7.5 million. Using Exhibit 1, compare the impact of head office transfer qualifying as sale and not qualifying for sale as Benito company's financial statements and key performance indicators. अच्छा, ये हमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कुछ कुछ दिए हुए हैं. A sale and leaseback transaction allows selling companies to free up cash, improve liquidity, and deploy capital into core activities. The decision as regards whether the sale and leaseback are treated as sale under IFRS 15 revenue from contracts with customer can significantly affect Benito company's key performance indicators and profitability, therefore affecting an investor's view of the assets which Benito company is using and the liabilities which it has. The following KPIs of the Benito company will be affected by the decision. Okay, gearing. सबसे पहले तो हमें गियरिंग के ऊपर बात करनी है. So when it comes to gearing, the formula is debt upon equity. So what will happen is कि let's assume कि हमें क्या है, क्वालिफाइंग फॉर सेल, क्वालिफाइंग एज सेल दिया गया है. तो बिकॉज हमें हमें क्वालिफाइंग फॉर सेल दिया गया है, वी ऑल्सो शो अ लीज लायबिलिटी. बराबर है. सो बिकॉज वी शो अ लीज लायबिलिटी, आवर डेट इंक्रीजेस. दो वी शो अ एसेट, आवर नेट
though we show a ROU asset in our books, the equity. So what is equity? It is the residual interest in the company's assets, net assets. So uh, it does not increase by that significant of an amount, but the debt increases by a significant amount. So because the debt increases by a significant amount, the gearing ratio increases, making the company look more riskier in nature and not qualifying for a sale. In not qualifying for a sale, the cash account debit and yeah, sorry, financial liability account credit. So again, the debt is increasing in that case as well. Earnings before interest and tax. If we say a lease, if we say that a lease liability has occurred, its payments would increase. I think earnings before interest and tax, है ना? Earnings before interest and tax would remain unaffected. Why would earnings before interest and tax change? That won't change. क्या मुझे इसमें फॉर्मूला वगैरह लिख के कुछ करना है, टेबल वगैरह बनाना है क्या मुझे इसमें कुछ, कि नहीं उसकी जरूरत नहीं है? नहीं, नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, फाइन। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में ऐसा कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज इफ वी सी जो हमारा फाइनेंस कॉस्ट लग रहा है लायबिलिटी के ऊपर, मतलब वो तो अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो हमें अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पूछा हुआ है। सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में दोनों के केस में कोई मतलब फर्क नहीं आएगा। फिर आता है एसेट टर्नओवर। द सेल्स प्रोसीड्स दैट हैव बीन अर्नड would be recorded as a profit rather than a sales on the during the ordinary course of the business. However, the total assets amount will increase in case of in in case where the transfer qualifies for a sale because an ROU asset is recognized. लेकिन the total asset, नहीं, total assets, the cash is received and a ROU asset is recognized. Only one single asset is de-recognized. Uh, So in this case, the asset turnover decreases, thus making the company look less asset rich to the investors. However, in the second case, what happens is uh, in the second case, the cash account debit होता है. The asset turnover falls by a higher amount because nor the right of use asset is recognized, and sorry, nor the previous carrying asset is de-recognized. ऐसा क्योंकि क्या हो जाता है कि when it is not qualifying, हम सिर्फ कैश डेबिट दिखाते हैं, लेकिन जब क्वालिफाइंग फॉर सेल रहता है हम कैश डेबिट दिखाते हैं, हम आरओयू डेबिट दिखाते हैं, और हम डी रिकॉग्नाइज करते हैं एक एसेट को, तो उसका नेट इम्पैक्ट जाता है। लेकिन एसेट टर्नओवर व्हेन इट कम्स टू नॉट क्वालिफाइंग सिर्फ एक ही बार कैश डेबिट जा रहा है, सो उसके वजह से एसेट टर्नओवर ज्यादा गिर रहा है। इक्विटी प्लस फाइनेंशियल लायबिलिटीज विल इक्विटी प्लस फाइनेंशियल लायबिलिटीज will fall in both the cases actually. However, in case of not for qualifying asset, it will fall by a higher amount, thus making the company look more riskier, or not more riskier, but it has not been able to generate that much year returns as compared to the equity or debts that they carry. चेक कर लेते हैं। The presence of a call option to repurchase means control of the asset will transfer once the option expires. Therefore, the treatment is the same if the transaction did not qualify as a sale. The decision as regards whether sale and leaseback can be treated as a sale under IFRS 15 can significantly affect performance ratios if the sale and leaseback cannot be treated as sale under IFRS 15. The gross assets and liabilities will be greater for seller lessee बराबर as the asset remains on the on the statement of financial position and the cash received is treated as financial liability. See, exactly, क्योंकि क्या हो रहा है कि हम एसेट को डी रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे हैं when it does not qualify for a sale में, एंड हम लोग कैश आ रहा है भी दिखा रहे हैं, तो एसेट इन जनरल बढ़ जाता है। बिकॉज ऑफ दिस एसेट टर्नओवर तो गिर ही जाता है। अब देखते हैं, मैंने और बोला रहेगा टोटल डेट वुड बी हायर एंड दिस में
have an impact which loan covenants based on total debt levels as it may lead to breaches. तो ये रहा. The difference in treatment will always also affect some profitability ratios because two elements, the depreciation and the net interest charge. The depreciation and interest charge will be higher in this case as the carrying amount of the property is recorded at the uh, at higher value than ROU. ओह हमें ना एक्चुअली ये भूल गए कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के वक्त ना खाली खाली वो डेप्रिसिएशन आ जाता है बार बार. तो जो पहले केस में व्हेन इट क्वालिफाइज फॉर अ सेल ना, सो व्हेन इट क्वालिफाइज फॉर अ सेल सिर्फ ROU एसेट का थोड़ा सा डेप लगता है. लेकिन जब इट डज नॉट क्वालिफाई फॉर सेल तो वो पूरे के पूरे कैरिंग वैल्यू का एक हेवी डेप्रिसिएशन लग के आता है. तो वो चेक करना है. ऑल्सो देर विल बी नो गेन रिकॉर्ड ऑन द सेल ऑफ द एसेट दस रिड्यूसिंग द प्रॉफिट. तो ये रहा gearing debt upon equity. Gearing will be higher because financial liability of 775 million is greater than the combined lease and the financial liability of 5.47. See, exactly कि debt upon equity में क्या हो गया कि in case of not qualifying for a सेल के केस में फाइनेंशियल लाइबिलिटी 7.5 मिलियन की रखी की हो गई रिकॉग्नाइज, और ड्यूरिंग सेल में खाली 5.47 की हुई रिकॉग्नाइज. तो नॉट फॉर नॉट फॉर केस सेल के केस में वो ज्यादा गिर गया. अभी नाउ दे हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस थ्री कॉलमिनर फॉर्मेट, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि गियरिंग लिख के उसका पैराग्राफ लिखो, मतलब वो बेटर है. Earnings before interest and tax. Earnings before interest and tax will be lower because higher depreciation based on the carrying amount of 3.75 million rather than ROU asset of 2.62 million. एक्चुअली ना हर केस में सेम ही चीज हो रही है तुम देखोगे तो, बिकॉज हर केस में डज नॉट क्वालिफाई ही पिट रहा है rather than that qualifies for a sale में. अभी ये देखो asset turnover, sales upon total assets. Asset turnover will be lower because property remains in SOFP in carrying amount of 3.75 million. This is higher than the ROU of 2.62 million if the transfer is a sale. ठीक है. नेक्स्ट वाले केस में हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला दिया हुआ है. ROU will be lower because EBIT will be lower. Also, financial liabilities will be higher if the asset is not sold. If the transfer is a sale, some if the transfer is a sale, equity will be higher because of the gain on sale and the reduced and the reduced depreciation, because earnings before interest and tax will be higher. Obviously, because क्योंकि हमको डेप्रिसिएशन कम अमाउंट पे चार्ज पड़ रहा है ना ऐसा. तो एंड गेन ऑन सेल. अच्छा, इन्होंने ना खाली ये इसमें गेन ऑन सेल भी ऐड किया हुआ है इन द प्रॉफिट. हाँ राइट, वो एक सेपरेट लाइन आइटम की तरह तरह होगा रिकॉर्ड. तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस वो अर्निंग्स बढ़ जाती है. बिकॉज अर्निंग्स बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली ROC ज्यादा दिख के आता है. ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्या बोला, ROC विल बी लोअर बिकॉज EBIT विल बी लोअर. ऑल्सो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज विल बी हायर if the high will be higher if the asset is not sold. If the asset is not sold, लेकिन if the transfer is a sale के केस में equity will be higher because gain on sale and the reduced depreciation, but also EBIT will be higher because earnings before interest and tax भी higher है and equity भी higher है, दोनों higher है ऐसा. लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं ROC ज्यादा आएगा. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.